to come in because I understand that Yogesh Pandey has a different point of view, and I know Mr. Reddy is going to want to respond to that. Mr. Pandey, what is your understanding right now about these protests? What is your understanding of the farm bill that has been brought in by the government? Yeah, Faye, in Maharashtra, basically the Sharad Joshi, the farmers who have faith in Sharad Joshi, who was the founder of the farmer movement. The farmers, because it was a demand by Sharad Joshi ji that farmers should be freed. He had a very liberal approach, and this was a demand by farmers whereby the APMC market to sideline and there should be some freedom to farmer to sell his produce. Now, about this other bill, about the contract farming, there was a big misunderstanding among the farmers. I had a myth that contract farming means taking farmers' land on the rent, means big corporate. But after going through and having a plain reading of the sections of the Act, if you read section 8, it very clearly says that no farming agreement shall be entered into the purpose of any transfer into sale, lease, mortgage of the land. This is first part. And very interestingly, I'll draw your attention on the section 14. Which says that notwithstanding anything contained in section, no action for recovery of any amount due in this order shall be against the agricultural land of the farmer. Means no order shall be passed against the farmer in lieu of his land. Means no one, the other party cannot claim his land in case of default. Say, I want to ask one question to all the panel member. What if farmer default? Now, if it is in the case of contract farming, which is whereby there is a contract between farmer and the sponsor, who is the beneficiary purchaser, whereby farmer will supply his produce for say 3 years. Maximum limit is 5 years, from one crop season to 5 years. Now, after 2 years, take an example of onion. If I contracted with some farmer for supply onion, and the prices of onion shoots to 80 rupees, I had contracted for 30 rupees. Now, if the farmer backs out, there is no legal liability, on him. The company. So through this, if we see the act on the, if we see from other part, it's a totally one-sided towards the inclined towards farmer. Now, one more very important aspect which I want to share, that in Maharashtra, the fruits which called the horticulture, floriculture, flowers, fruits, these are all sold through contract, which whereby Bhagwans, they comes and just see the crop and they enter verbal. Now, through this legislation, all these activities which were just within the word of mouth, now they will through the legalized terminology. So, through this bill, that door is open. So, okay. So overall, if we see the entire bill, I don't think anything, and that is the main reason. As gradually people are coming to, and it's just a piece of legend. Now, all other questions are regarding. One second, Yogesh Pandey. Let the others respond to you, and then we'll go further into this. We've had several conversations. हमारी काफी बातचीत हुई है पिछले 3 साल से योगेश पांडे की बात कि MSP के बारे में, और सरकार की जो अभी कैलकुलेशन है MSP के बारे में, वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की जो MSP नहीं है, वो this is a completely different calculation of MSP. So do you think, Mr. Pandey, that the government must include a clause in this very complicated bill that the farmers will get the MSP that the government has announced? Why is that so hard to do? Actually, if you see, 2 days back only Honorable Prime Minister had announced in public domain that MSP is going to be there. Say, I have a very different perspective. Now we need to do the analysis of what is the definition of agricultural produce and what gets included in agricultural produce. It is not only about the wheat, jowar, bajra, rice, wheat, cotton. There are fruits, there are veggies, there are medicinal plant, medicines, herbs, हर चीज आती है in agricultural produce. Now उसके अंदर कोई MSP है क्या? बताओ. वो उसके अंदर तो MSP system नहीं है. Means then what is the composition of this thing? इनका composition कितना है? 20, 25, 30%. फिर 30% के लिए तुम बोल रहे पूरा बिल खराब है, और इसके पहले how was the sales? इसके जो बिक्री होता था बाकी जो प्रोड्यूस के, टेक अबाउट मैंगोज, ग्रेप्स, मौसम्बी, ऑरेंज, इसका कैसा होता था? देयर वाज नो एमएसपी, एंड ये सब प्राइवेट नेगोशिएशन पे होता था. देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट. देयर आर द केसेस जहाँ पे लोग यहाँ पे एग्रीमेंट करके, मतलब जवानी एग्रीमेंट थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था. इवन लीगल रहा, चेक बाउंस हुए फार्मर के. मेरे एक फ्रेंड ने सुसाइड किया किफाड़ में, ग्रेप्स का उसका पैसा डूब गया. 1.5 साल पहले मेरा क्लासमेट ने सुसाइड किया, उसके 40 लाख रुपए उसने पैसा नहीं दिया. नाउ बाय दिस एक्ट देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर. इसके अंदर एक प्रोसेस है. पहले कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे कि इसमें तो कोर्ट में जाने की बात ही नहीं है. माइंड यू, आई एम नॉट स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी. आई जस्ट एज अ लॉयर,
मेरे को खाली चीजें रखनी है, तथ्य क्या है इसके लॉ के अंदर, और इसके अंदर पूरी पर्याप्त प्रोसीजर है इसके अंदर कि अगर डिस्प्यूट हुआ एंड फार्मर्स कैन इमीडिएटली सू द अदर पार्टी एंड नहीं, लेकिन योगेश जी, छोटे किसानों के पास कैसी ताकत है अदर पार्टी को सू करने के लिए? आप समझो कि सामने आपके मॉन्सेंटो खड़े हैं या रिलायंस या अदानी, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज खड़े हैं. डू यू एक्सपेक्ट अ फार्मर ऑफ 2 acres 3 acres टू बी एबल टू सू देम? इज दैट फेयर? या फॉर दैट संगठन है ना, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, आज इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इतने नामांकित है, और हम लोग ने क्या है, आई वाज आल्सो एसोसिएटेड फार्मर्स एसोसिएशन, मैंने भी काम किया है, और हम लोग छोटे छोटे फार्मर के लिए लड़ते हैं, फार्मर्स एसोसिएशन फॉर स्मॉल साइज फार्मर. और दूसरी बात देखो कि जो लैंड होल्डिंग है या महाराष्ट्र में जो लैंड होल्डिंग है सब छोटी छोटी है. ये टेक इन द केस ऑफ शुगर केन, सब 5 एकड़ 10 एकड़ के अंदर के. नाउ इन दैट वी हैव शो इट इज बीन प्रूव्ड फार्मर्स नेगोशिएट फाइट फॉर देयर एमएसपी इन शुगर केन. जो उनका जो एफआरपी रहता है वो उनको लेके रहते हैं उसके अंदर विद आल्सो इंटरेस्ट के साथ में. और ये बिल के कारण इसमें देखो कोई बहुत बड़ा ये इट्स पीस ऑफ लेजिस्लेशन जहाँ पे. और दूसरी बात है कि इट इज नॉट मैंडेटरी, आपको नहीं जाना है मत करो, इट्स नॉट बाइंडिंग. Okay, I can see Avik